on our channel Hirsch Panjeta, but now it is CLASSOVATE to pathway to our future education futedu. So आज की इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं CLASSOVATE presents AI curriculum camp, and this is a trial ball of it like in cricket. So आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स करेंगे एआई के। सो आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स बडीज जो हमारे चैनल को नहीं फॉलो करते हैं लेकिन फॉलो भी करते हैं, मीन्स या तो फ्रेशनर्स है, फ्रेंड्स है, या तो बडीज है, या अननोन है, उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि हम जल्दी से उन तक ये वीडियो और ये नॉलेज पहुंचा सकें। We will start in just 1 minute. I'll be back with my voice here. So we are back. Now, few seconds are left to go. So let's start. And अगर आपको भी AI में interest है, so type yes in the comments and I'll see. I have opened the comments and आपके yes type करते ही आप तक ये PDF पहुंच जाएगी. Okay, so हम अब let me show you one page here which can be important if you are having your exams tomorrow or it is upcoming. So मैं आपको एक important पेज दिखाता हूँ जिसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है एंड वो ही आपका स्टार्टिंग होगी. Just read this out until our buddies are joining with us.
ओके, सो सस्टेनेबिलिटी क्या है? वो आई है एक वर्ड सस्टेन से, एंड सस्टेन का मीनिंग होता है मेंटेन, सपोर्ट, आई विथस्टैंड और एंड्योर। ठीक है, तो अभी इस सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टू मेंटेन दी वर्ल्ड, हमारी अर्थ को मेंटेन कर जिसके अंदर हम रहते हैं। एंड इसका की आइडिया है कि हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं इस प्लेनेट पे वो अगली जनरेशन के लिए बचे, उनको सपोर्ट करें आने के लिए। देन हम पढ़ेंगे सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इनका एक रिलेशन बन जाता है। देखो, सोसाइटी बेसिकली क्या होती है? पीपल अराउंड अस। ये हमारी अर्थ में, मतलब सस्टेनेबिलिटी क्या थी? टू मेंटेन द वर्ल्ड वी लिव इन, एंड उस वर्ल्ड में हमारे साथ और भी पीपल रहते हैं, तो पीपल अराउंड अस रिफर्स टू द सोसाइटी। सो ये एक पहला लिंक बन जाता है। एंड अगर हमें ट्रूली सस्टेनेबल होना है तो हमें सभी को अपनी सोसाइटी में इंश्योर करना है कि वो सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करें। एंड हाउ कैन वी अचीव इट? वी फॉर दैट वी हैव दीज 17 गोल्स। ओके, हमारे पास ये टोटल 17 गोल्स है विच इज एस्टेब्लिश बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस इन 2015। यप, 2015 में हुए थे, एंड वी हैव टू अचीव दिस बाय 2030। एंड आपको ये लर्न करनी होगी। पहले नो पोवर्टी है, फिर जीरो हंगर है, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, देन हिज क्लीन water and sanitation, then is affordable energy, then is decent work and economic growth, then we have is innovation, infrastructure, industry, then we have reduced inequalities, and then we have the sustainable cities and communities, then we have responsible consumption, then climate change, life below water, life on land, peace, justice, and strong institutions, there is partnerships in the goals is the last call. देन ये गोल्स कितने भाग में डिवाइड है? पहले एक इकोनॉमी में, फिर सोसाइटी में, फिर बायोस्फीयर में। देखो, आपके बायोस्फीयर में आते हैं लाइफ, क्लाइमेट एक्शन, then clean water and sanitation, life below water and life on land. then फिर आपकी सोसाइटी में आते हैं जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस inequalities, then we have is quality education, good health and well-being, peace wala, and strong institutions one, then no poverty, and as the sustainable cities and the developments, and there is affordable energy. And वहीं इकोनॉमी में आते हैं पार्टनरशिप्स एंड गोल्स, देन we have is reduce inequalities, then is responsible consumption, then is infrastructure, industry, and innovation, and then is decent work and economic growth. These are how they are bifurcated into three categories. देन अभी हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या है? एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड थिंग्स का। दे बिहेव, सिस्टम्स एक इंडिविजुअल कंपोनेंट से बने हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एंड ये यूजुअली किससे प्रेजेंट किया जाता है? सिस्टम मैप्स के थ्रू। सो इसको आप ये मान सकते हैं कि इट्स कंपोनेंट्स इंटरैक्ट एंड अफेक्ट ईच अदर। एंड इस फीचर का नाम, तो एक
आपसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द फीचर दैट सिस्टम हैव इट इज इंटरकनेक्टेडनेस एंड हाउ इट हैज दिस इज सिंपली जस्टिफाइड बाय दैट इट्स components interact and affect each other. Okay, then these are not of your syllabus. This are not such important one. अभी आता है मेन. एक प्रोजेक्ट क्या होता है? A project is a series of tasks or a group of activities that needed to be completed to receive a specific goal under the given constraints. And वो constraints है limited resources and time. देखो, एक सीरीज ऑफ टास्क मतलब बहुत सारे टास्क दे दिए जिनको, हाँ, ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, या तो लिमिटेड रिसोर्सेज है और एक लिमिटेड टाइम है. आपको ये इतनी सारी लिस्ट दे दी टास्क की. दीज नीडेड टू बी कंप्लीटेड टू गेट अ गिफ्ट और टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स यूजिंग और अंडर दीज कॉन्स्टेंट्स. देखो, आपको बोल दिया कि आपको आलू गोभी प्याज टमाटर लाना है ताकि आपको सब्जी मिल पाए. अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है उसको लाने का और लिमिटेड रिसोर्सेज यानी लिमिटेड मनी है. आपने भावताल करके लिमिटेड टाइम में आप लेके आओगे, लिमिटेड रिसोर्सेस से और लिमिटेड टाइम में, अच्छे पैसे में आपको बजट भी देखनी है और बचत भी करनी है. दैट्स वाई. तो अभी आपको जब कंप्लीट होगा तभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा अंडर दीज गिवन कॉन्स्टेंट्स. दोबारा एक बार इसकी डेफिनेशन लर्न करो. एआई प्रोजेक्ट इज अ सीरीज, और एआई प्रोजेक्ट अभी आया नहीं है तो प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ टास्क और अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट नीडेड टू बी कंप्लीटेड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स. एंड वो कॉन्स्टेंट्स है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम. अभी अगर एक प्रोजेक्ट है मतलब वो भी एक सीरीज ऑफ टास्क है, अभी उसके अगर साइकिल बना दे, बार 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 बहुत सारे टास्क करना, मतलब एक प्रोजेक्ट लिया फिर दूसरा प्रोजेक्ट फिर दूसरा प्रोजेक्ट फिर दूसरा प्रोजेक्ट फिर दूसरा प्रोजेक्ट, ऐसे पूरा सर्कल बना दे. पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर फर्स्ट वह सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर फर्स्ट, ऐसे पूरी एक साइकिल बन जाएगी. वही होती है हमारी प्रोजेक्ट साइकिल. A project cycle is the sequence of phases through which the project progresses. मतलब एक फेज आ गया, जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको सब्जी लेके आनी है अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स. अभी आप क्या करोगे? गो गो आउटसाइड ऑफ योर होम, पिक योर स्कूटी और कार, then check if it is filled with petrol or diesel or electricity. If not, you will first go to the petrol pump and get it filled up. Then you will go to the market. Then you will purchase. Check whose price is good and affordable. Then you will take the desired amount of it and then come to home, park your car, and then give it to your chef or your mother to make it. या दिस इज अ प्रोजेक्ट साइकिल. इट मीन्स वो एक सीक्वेंस दे देते हैं कि आपने इन सब फेजेस से होके गुजरना है, ये सारे स्टेप्स मान लो, ये स्टेप्स आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट करने हैं. अ प्रोजेक्ट साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस थ्रू विच एन और अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. एक प्रोजेक्ट जिस फेजेस के थ्रू गुजरता है उसका एक सीक्वेंस को नाम दिया है प्रोजेक्ट साइकिल. दोबारा से रिपीट करते हैं, प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है? प्रोजेक्ट साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस थ्रू विच अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस. अभी यहाँ तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साइकिल में बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, टाइम भी बहुत अच्छा है, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो तो लंबा होगा तो उसमें फेजेस भी लंबे होंगे. ऐसे ही सीक्वेंस भी लंबा होगा बहुत. जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ा फेजेस, उतने ज़्यादा स्टेप्स और उतने ज़्यादा ही बड़ा सर्कल यानी सीक्वेंस. सो ये नंबर ऑफ फेजेस और सीक्वेंस ऑफ साइकिल वो वेरी किस पे करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. टाइप ऑफ प्रोजेक्ट.
Okay, so project cycle and project is clear. What is project? Project is a series of tasks or a group of activities that needed to be completed to achieve a specific goal under the given constraints, and वो constraints है limited resources in time. And what is project cycle? Project cycle is a sequence of phases through which a project progresses, and उनकी number of phases और sequence किस पे depend करता है? On the type of the project. मूविंग टुवर्ड्स सी नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल लेंगे प्रोजेक्ट साइकिल का, जो कि है कॉफ़ी प्रोडक्शन सिस्टम। अभी कॉफ़ी प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है? इसमें मेजर 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि है हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, रोस्टिंग, पैकेजिंग। रिपीट आफ्टर मी, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोस्टिंग। Oh, last two swapped up. Harvesting, processing, roasting, packaging. Harvesting, processing, roasting, packaging. The if NCRT or CBS is covering this means this is something important. So you just have to memorize it. HPRP. HP for my name, Harshmita. HPRP. HPRP जो कि है हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, रोस्टिंग एंड पैकेजिंग। पहले होती है हार्वेस्टिंग, फिर होती है उसकी प्रोसेसिंग, फिर होती है उसकी रोस्टिंग, फिर होती है पैकेजिंग। रोस्टिंग वो वाला मत समझना बोल के किसी को रोस्ट करना, नो, इट इज रोस्टिंग बाय द मशीन्स, बर्न करके रोस्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉफी प्रोडक्शन भी एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट साइकिल फॉलो करती है। फर्स्ट क्या होता है, coffee seedlings are nurtured in fielding fields for several years until the first harvest. पहले वो उगती रहती है until the first harvest. So we can say that coffee seedlings are nurtured in fields for several years until the first harvest. तो अभी हम बात करते हैं, आप बस मेमोराइज कर लें, दिस इज अ रिवीजन क्लास फॉर यू। First is harvesting. Ripe coffee cherries are picked carefully by hand or machine. Second, processing. Different methods to remove the fruit surrounding the coffee bean impacting the flavor. Different methods to remove the fruit surrounding the coffee bean impacting the flavor. Then is roasting. Beans are roasted to develop flavors and aroma before packaging for sale. बीन्स को क्या करा जाता है, रोस्ट करा जाता है ताकि उनका एक फ्लेवर डेवलप हो जाए एंड उनमें से एक फ्रेश अरोमा आए बिफोर द पैकेजिंग ऑफ द सेल। देन वी हैव पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स कॉफी, रोस्टेड जो कॉफ़ी होती है वो पैक करके फॉर्म ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्ट्स में सेल कर दी जाती है। सो रिपीट आफ्टर मी, कॉफी सीडलिंग्स आर nurtured in field for several years until the first harvest. This is the first thing, like they are growing, they are in a growing period. And then we have is harvesting. Ripe coffee cherries are picked carefully by hand or machine. Second is processing. Different methods to remove these fruits surrounding the coffee bean impacting the flavor. Roasting is beans are roasted to develop flavors and aroma before packaging for sale. Packaging is roasted coffee is then packaged and in form of coffee products. So what this cycle ensures is the quality and deliciousness of coffee. Okay, देखो, there is an illustration of it. Here the ripe coffee cherries are picked carefully by hand or machines. That is processing. They are applying different methods to remove the fruit surrounding the coffee bean, impacting the flavor. Then at the end, they are roasting. Roasting includes like roasting the coffee beans, which is to develop the flavor and aroma. And then packaging in the form of coffee products. HPRP, harvesting, processing, roasting and packaging. Then we have next is AI प्रोजेक्ट साइकिल। क्या होती है, देखो अभी हमने प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था। प्रोजेक्ट साइकिल का डेफिनेशन क्या थी,
The comment section is open for you. You can write the answer. Okay, anyways, project cycle. Project cycle is the sequence of phases through the project progresses, जिसके थ्रू प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस होती है. एंड फॉर द फ्रेशनर्स हु केम जस्ट नाउ, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज अ सीरीज और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज that needed to be completed to receive a specific goal under the given constraints. and वो constraints कौन से थे? Yes, limited resources and time. अभी AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है, क्योंकि मेन तो हमारा AI की है ये क्लास. AI प्रोजेक्ट साइकिल वो एक साइक्लिक प्रोसेस होती है. साइक्लिकल, या आप बोल सकते हो साइक्लिक प्रोसेस. मतलब जो कॉन्टिन्यू है, फॉर्मल है, रुक नहीं रही है, कॉन्टिन्यूअस है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल प्रोसेस. मतलब वो सर्कल में घूम रही है. साइकिल के टायर कैसे होते हैं? सर्कल. ऐसी उसका नाम भी है साइक्लिकल प्रोसेस, जो अपने आप को रिपीट कर रही है. एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ साइक्लिकल प्रोसेस फॉलोड टू कंप्लीट एन एआई प्रोजेक्ट. एक एआई प्रोजेक्ट मतलब एआई के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट. AI project cycle is the cyclic process through which an AI project is completed. Means again, AI project cycle एक cyclical process है, मतलब continuous है, repetitive है, and in a circle है, and it is maintaining itself. AI project cycle is the cyclical process followed to complete an AI project. प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ही ये थी कि कुछ सीरीज ऑफ टास्क जो कि अंडर कॉन्स्टेंट्स काम करते हैं ताकि एक गोल अचीव कर सके. इसमें वही साइक्लिक प्रोसेस है जो एक एआई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी. एंड ये हमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू लेके जाती है. देखो, ये हमें हेल्प क्या करती है, आप इसको इसके बेनिफिट्स भी लिख सकते हो. इफ इन एग्जाम्स इट कम एज राइट द बेनिफिट्स ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, तो आप लिख सकते हो टू क्रिएट बेटर एआई प्रोजेक्ट्स इजीली, ताकि आप एआई प्रोजेक्ट्स इजीली बना सके. टू क्रिएट एआई प्रोजेक्ट्स फास्टर एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. सेकेंडली, दोबारा बताते हैं, एआई प्रोजेक्ट बेटर और इजीली बना सके और फास्टर बना सके, एंड उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सके. अगेन, फ्रॉम द डेफिनेशन टू द बेनिफिट्स. AI project cycle is the cyclic process followed to complete AI project, and it helps us to create better AI projects easily, to create AI projects faster, to understand the process. Okay, so actually our philosophy is 1 hour for one chapter, but it will be finished in half an hour se become, because we are like a super bullet train. Okay, which was the next. अभी आपको पूछ सकते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट्स कौन से हैं? ग्लीज इज 667cc and Kepler 69c. Don't say it's 6, 7. Okay, next. अभी देखो, हमने बात करी थी ए प्रोजेक्ट साइकिल टेक्स अस थ्रू मेनी स्टेजेस. हियर आर दोज स्टेजेस. एआई प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल 6 स्टेजेस होती है, फ्रॉम प्रॉब्लम scoping to the deployment. First is problem scoping, data acquisition, data exploration, and then is modeling, and then is evaluation, then is deployment. देखो, प्रॉब्लम स्कॉपिंग में क्या होता है? सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है हमारा. तो वही है, इन दिस स्टेज वी डिफाइन द गोल फॉर द प्रोजेक्ट. डाटा एक्विजिशन में एक्विजिशन मतलब लेना, डाटा को लेना मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा एक्सप्लोरेशन उसकी छानबीन करना, उसको प्रेजेंट करना, उसमें ट्रेंड्स ढूंढना, उसको स्टडी करना. देयर इज मॉडलिंग. मॉडलिंग मतलब मॉडल बनाना जो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डील कर पाए और उसको सॉल्व कर पाए. इवैल्यूएशन मतलब हमारे मॉडल को टेस्ट करना, इवैल्यूएट करना, मार्क्स देना कैसा बना है. दैट इज डिप्लॉयमेंट
कि जो आपने बनाया है अपना सॉल्यूशन दुनिया तक पहुंचाना, पब्लिश कर देना। Here we have in a formal way written, देखिए प्रॉब्लम स्कोपिंग इज द स्टेज वी डिफाइन गोल फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए गोल कि भाई हाँ आपको ये करना है, इस प्रॉब्लम का हल निकालना है। देन इज हमारे पास है डाटा एक्विजिशन, जिसमें हम एक वो डाटा कलेक्ट करते हैं जो आपको लगता है कि यू विल नीड टू ट्रेन योर मॉडल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू कलेक्ट द डाटा नीडेड, जो आपको नीड है जिस डाटा की, दैट इज डाटा एक्सप्लोरेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू विजुअलाइज डाटा इन अ फॉर्म दैट इज ह्यूमन रीडेबल और ह्यूमन फ्रेंडली। उस फॉर्म में डाटा को लिखना या विजुअलाइज करना जो ह्यूमन फ्रेंडली हो और ह्यूमन द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू विजुअलाइज डाटा इन अ फॉर्म दैट इज ह्यूमन रीडेबल एंड ह्यूमन फ्रेंडली। ये कैसे होगा, थ्रू ग्राफ्स, प्लॉट्स, चार्ट्स एंड ऑल। ओके, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट एंड मैनी मोर। ओके, फोर्थ स्टेज हमारी आती है मॉडलिंग। यस, मॉडलिंग। वाओ, मॉडलिंग सुन के ना लाइक वो वाला मॉडल नहीं है कि लड़के मॉडल बनते हैं, नो, इट्स अ एआई मॉडल। कि आप जैसे आप बनाते नहीं हो मॉडल एग्जीबिशन में, कोई मॉडल लेके जाते हो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वही मॉडल है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज is to implement algorithms and fine tune the model which gives you the best results. Okay, एक आप अपने एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना और एक फाइन ट्यून करना एक बेस्ट मॉडल जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। मतलब एक मॉडल बनाया, उसमें आपने एल्गोरिदम्स फीड करे और एक ऐसा मॉडल बनाया जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं उस यस उस सिचुएशन में। There are two types of AI based models that we will discuss later on upon this video. So इसका main objective of modeling is to implement algorithms and fine tune the model which gives you the best results. The second last stage is we have evaluation. The main objective of this stage is to test and evaluate the different models and choose the best model. Like आपके पास दो प्रकार के मॉडल हैं, मैंने बताया। अभी आपको नहीं पता, आपने दोनों को फाइन ट्यून बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कर दिया है, आपने दोनों में इम्प्लीमेंट कर दिए एल्गोरिदम्स, दोनों को सिखा दिया है, दोनों को डाटा दे दिया है, दोनों को प्रॉब्लम स्कॉप कर दिया है, दोनों को डाटा विजुअलाइज करने के लिए दे दिया है, सबने बेस्ट रिजल्ट दे दिए हैं। बट अभी आपको उसको टेस्ट करना है एंड इवेल्युएट करना है डिफरेंट मॉडल्स को एंड एक बेस्ट मॉडल चूज करना है जो कि इस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन देने को, इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगा। सो इवेल्युएशन की मेन ऑब्जेक्टिव ये है, the main objective of evaluation is to test and evaluate the different models and choose the best model. Wow. Okay. And last stage, the final one, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करेंगे वो है डिप्लॉयमेंट। मतलब to deploy your solution based on the model you have selected. मतलब अपने सॉल्यूशन को दुनिया तक पहुंचाना, एक ऐप को पब्लिश कर देना, या एक सॉल्यूशन को एंड में कंक्लूड करते हैं जैसे सैल्यूटेशन। मतलब देखो, आप लेटर या कोई स्टोरी या कुछ कैसे स्टार्ट करते हो, सैल्यूटेशन या फिर संबोधन से, एंड एंड किससे करते हो, कंक्लूजन से। ऐसे ही इसका सैल्यूटेशन यानी संबोधन है क्या, प्रॉब्लम स्कोपिंग, और कंक्लूजन अंत क्या है, डिप्लॉयमेंट। ये वही सिस्टम है। प्रॉब्लम स्कोपिंग हेलो है, डिप्लॉयमेंट बाय बाय है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज इज टू डिप्लॉय योर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द मॉडल यू हैव सिलेक्टेड। ओके, अगेन
The main objective of this stage is to deploy solution based on the model you have selected. So, Abhi, let me hide you for no, 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 no. Yes, hidden. ताकि आप कोई भी चीटिंग ना कर पाए. अभी हम सारा रिवाइज करेंगे एक साथ. प्रॉब्लम स्कोपिंग. In this stage, we define the goal for this project. Second, data acquisition. In this stage, we collect the data which you think it is required. Third is data exploration to visualize the data in a form that is human readable and human friendly. Modeling. Implement algorithms and fine tune the model which gives you best results. Then is evaluation to test and evaluate different models and choose the best model. Then is deployment to deploy your solution based on the model you have selected. Okay, you are all done with your AI project cycle के stages, but now we are studying them in brief. प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है हमने अभी डिस्कस करा था. टू डिफाइन अ गोल फॉर दिस प्रोजेक्ट. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसके लिए. टू किक स्टार्ट द एआई प्रोजेक्ट. मतलब हाँ भाई तुझे भी स्टार्ट होना ही होगा. ये है ये. अभी ये क्या करती है देखो. इसमें होता है टू फिगर आउट द प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है. हम वो चीज़ फिगर आउट करें जो हमें सॉल्व करनी है और हम वे उसके वेरियस एक्सपेक्ट्स देखें और एक विजन डेवलप करें कि हमें ये सॉल्व करनी है. इसको आप किस तरह से इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं. लेट मी टेल यू. ओके, आपको सीधा पूछ लेगा एक्सप्लेन प्रॉब्लम स्कोपिंग. तो आप पहले इसको एक्सप्लेन करोगे. इन द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेट वी डिफाइन अ गोल फॉर द प्रोजेक्ट. इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए प्रोजेक्ट साइकिल. दैट्स इट. देन अगर उसने पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टेट, मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, तब आप ये लिखोगे टू फिगर आउट द प्रॉब्लम which needs to be solved, to understand the various aspects of the problem, to develop a vision to solve the problem. और आप एक और लिख सकते हो टू डिफाइन अ गोल फॉर द प्रोजेक्ट. ये आप चार चीज़ें ज़रूर लिखना. योर 2 to 3 marks आर डेफिनेटली counted or 100% sure. Okay. To figure out the problem that needs to be solved, to understand the various aspects of the problem, to develop a vision to solve the problem, to define the goal for this project. आगे चलते हैं. आगे हम बात करें 4Ws प्रॉब्लम कैनवास. देखो, जब भी हम प्रॉब्लम स्कोपिंग पे आते हैं वहाँ हम गोल डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है प्रॉब्लम और किसको प्रॉब्लम है ये भी तो जानना होगा. तो हु आ गया. कहाँ प्रॉब्लम है ये भी जानना होगा तो वेयर आ गया. क्यों प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है उसका, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है, वो है वाई में. सो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सप्लेन 4Ws प्रॉब्लम कैनवास, तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो. पहले हु डिफाइंस. हु क्या डिफाइन करता है. हु डिफाइंस हु इज हैविंग द प्रॉब्लम. यही वाला हु इज हैविंग द प्रॉब्लम. या फिर हु आर द स्टेक होल्डर्स. देन आप लिखोगे वट डिफाइंस वट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. वट इज द प्रॉब्लम. Then is where. Where defines where does the problem arise. Where defines where does the problem arise. या फिर what is the situation or context in which stakeholders are experiencing this problem. Then you start with why. Why defines why do you believe it is a problem worth solving. Or why it is important to solve it. How would it improve their situation?
सो नो चिटिंग्स एंड अभी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे. एक्सप्लेन 4 W's कैन प्रॉब्लम कैनवास. Who defines who is having the problem? They are called stakeholders. What defines what is the nature of the problem? Third, where defines where does the problem arise, means the location of the problem. Why? Why do you believe this problem is worth solving, or why is it important to solve it? And how would it improve their situation? And this is what we write. Next. अगर आपसे कुछ पूछे कि राइट 4 W's कैनवास गाइडलाइंस, तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो, फर्स्ट वी मस्ट सिलेक्ट अ प्रॉब्लम, देन don't try these, this is just an example. Consider the problem. Consider the problem using existing resources. Consider the problem using our existing resources. Then we will fill the problem scoping template for this problem. अभी मैं वो भी बताऊंगा ये प्रॉब्लम स्कोपिंग टेम्पलेट आखिर है क्या. पहले ये गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. First we must select a problem. Consider the problem using our existing resources. Third, then we must fill the problem scoping template for this problem. ये है 4 W's एक्टिविटी गाइडलाइंस. अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट की. ये कुछ इस प्रकार दिखती है. आर स्टेक होल्डर्स, ये आते हैं हु में. हैज द प्रॉब्लम दैट, इशू है और प्रॉब्लम यहाँ आप लिखोगे, ये आता है व्हाट में. व्हेन और व्हाइल, यहाँ आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, जो कि आता है वेयर में. एंड आइडियल सोल्यूशन वर्ड, यहाँ आप लिखोगे बेनिफिट ऑफ सोल्यूशन फॉर देम, और ये आता है वाई में. देखो पहले हम आपको बस ये लाइन याद रखो. आर स्टेक होल्डर्स हैज अ प्रॉब्लम दैट, प्रॉब्लम व्हेन वाइल एंड आइडियल सोल्यूशन वुड आर. जैसे आप कंसीडर करिए कि आपको एक सिचुएशन दे दी कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. सो आर हु इज हैविंग दिस प्रॉब्लम? Citizens, public, sorry, has a problem that a lot of traffic in city. When and while during their road travels. An ideal solution would integrating AI based traffic lights, police officers, and that all. Okay. एंड अगर आपको कोई पूछे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, तो आप कुछ ऐसे ही लिखोगे. दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम स्कोपिंग टेम्पलेट लुक्स लाइक. फिर आपको ये टेबल बनाना होगा एंड फिर आपको लिखना होगा इट इज यूज टू फ्रेम द 4 W's into a paragraph to describe your problem, the stakeholders involved, and how solving the problem would benefit them. First, it is used to frame the 4 W's into a paragraph to describe your problem, the stakeholders involved, and how solving it would benefit them. Okay, repeat after me. हम इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं जल्द ही. Explain the problem statement template. This is what a problem scoping template looks like. Our stakeholders what has a problem that, then you issue or problem what, who, what, when, while, context or situation, where, an ideal solution would, benefit of solution for them, why. It is used to frame 4 W
into a paragraph to describe your problem, stakeholders involved, and how solving the problem would benefit them. Okay, moving towards the next. अभी ये एक आपको एग्जाम्पल दे दिया है, फाइंडिंग एन एक्सोप्लैनेट आर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रेस. ये है हु में हैज अ प्रॉब्लम दैट नीड टू फाइंड एन अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट when while utilizing our existing resources. An ideal solution would help in recognize ये predicting ये दे उनका benefit है. Just have a look towards them, just read them once. Okay. अभी हम आपको एक सिचुएशन देते हैं. एक प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन योर सिटी अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द इन्वायरमेंट. ये है आपकी सिचुएशन. चिल्ड्रन स्पेशली फेसेस challenges like breathing issues and reduced outdoor playtime due to poor air quality. Understand the problem using 4 Ws. पहले R में आप लिखोगे who is having people, then has the problem that what is the problem, air pollution when and while in the city. And ideal solution would, it would improve the air quality, it will manage their illnesses and all. ओके हम आ चुके हैं दूसरी स्टेट में, जो कि है डाटा एक्विजिशन. अभी हमने क्या डिस्कस करा था, डाटा एक्विजिशन क्या होती है. इन दिस स्टेज we collect the data we think we will need to solve the problem using AI. Repeat after me. We will collect the data we think we need to solve this problem using AI. The one who has joined right now should comment his or her name in the comment section for the lucky draw round coming soon after this month. Okay. अभी हम बात करते हैं डाटा एक्विजिशन की. फॉर डाटा एक्विजिशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट डाटा AI learns that the data AI learns from is dependable and correct. ये एक ड्रॉबैक हो सकता है डाटा एक्विजिशन का अगर वो डाटा जो है बायस्ड हो. बायस मतलब कुछ डिफॉल्ट या किसी एक पार्टी या किसी और के पक्ष में या अनफेयर हो, मेनली अनफेयर. ओके. इट इज इंपॉर्टेंट दैट डाटा AI लर्न्स फ्रॉम इट इज डिपेंडेबल एंड करेक्ट. अब ये डाटा कैसे कलेक्ट हो सकता है. It can be collected using different methods depending on the method choose. The type and way of presenting of data may also differ. तो इसके दो कॉन्स्टेंट्स आप याद रखना कि डाटा डिपेंडेबल होना चाहिए और एक्यूरेट एंड करेक्ट होना चाहिए. नो बायसनेस इन इट. अभी आप बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा की. वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं. पहला होता है टेक्सुअल. टेक्सुअल मतलब टेक्स्ट, जैसे कि ये है फॉर डाटा एक्विजिशन दिस, मतलब ये टेक्सुअल में है, अल्फाबेट से रिटन है. न्यूमेरिक डाटा जो नंबर्स में होता है 1 2 3 4, लाइक हेयर टाइम है यहाँ 11:36. देयर इज विजुअल डाटा जो कि इमेजेस और वीडियोस के थ्रू होता है, लाइक यहाँ एक इमेज है, ये भी विजुअल डाटा है. एंड यहाँ एक छोटे छोटे आइकन्स है, ये भी विजुअल डाटा है. These cover the huge widely the range of visual data. देखो अभी हम बात करें टेक्सुअल डाटा ऑफन कैसे रिप्रेजेंटेड होता है. वो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है. न्यूमेरिक डाटा टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है और विजुअल डाटा इमेजेस और वीडियोस होती है. बट in these depth your paper will not cover. If it is of 20 to 80 marks, इसमें वो डेप्थ इंक्रीज होते रहते हैं. अगर आप 20 से 80 पे जाएंगे तो आपके डेप्थ इंक्रीज होंगे, बट इफ इट इज 20 देन इट विल नॉट कवर इन सच डेप्थ. वी विल स्किप दिस. एंड अभी हम बात करेंगे प्राइमरी रिसोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं. वो सोर्सेज से डाटा कलेक्ट होते हैं जहाँ से फ्रेश और ओरिजिनल डाटा होते हैं.
प्राइमरी सोर्सेज हमें वो डाटा देते हैं जो फ्रेश हो, ओरिजिनल हो, और वो स्पेसिफिकली हाँ आपके एआई प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट किया गया हो। मतलब प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना एसएसटी में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेम ही हो। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट टू द फार्म, मतलब डायरेक्ट कलेक्टेड फॉर ओनली फर्स्ट टाइम कलेक्टेड एंड दैट ओनली फॉर योर एआई प्रोजेक्ट। मतलब जैसे आपको ये काम करना है, आपने पूरा गूगल छान लिया, वो कहीं नहीं है उसके लिए डाटा, आपने खुद से कलेक्ट करा, तो आप प्राइमरी सोर्स हुए। फ्रेश ओरिजिनल कलेक्टेड डाटा स्पेसिफिकली फॉर योर प्रोजेक्ट साइकिल। Then we have such examples for this. First is conducting surveys or questionnaires, running experiments, manually collecting. देखो आप इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो। conducting surveys, questionnaires, running experiments, collecting sensor data. ये छोड़ दो, this is not such important for you guys. Then we have, this is also not important. These 4 points you can write in your exam. You will definitely get your marks. Collecting surveys, questionnaires, running experiments, collecting sensor data. Or if you have to write more, you can include this: manually collecting and labeling data. Manually collecting and labeling data. There is secondary sources. प्री एग्जिस्टिंग डाटा, जो पहले से ही गूगल या किसी वेबसाइट पे किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलेक्टेड है एंड वो दूसरों के लिए अवेलेबल है। एंड ये डाटा ऑफर फ्री होते हैं या तो बहुत ही लो कॉस्ट में होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं: प्री एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल, इट्स रेडिली अवेलेबल एंड ऑफर्ड फ्री और लो कॉस्ट। And after this chapter we will have a short break of approx 1 minute, 1 to 10 minutes, and then we will start our second chapter. आज मैं आपकी ये बुक कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कैगल 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 क्या है? इट इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ डाटा साइंटिस्ट वेयर यू कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटास। And then we have is countries like Australia, EU, India, New Zealand, and Singapore are openly sharing data sets on various portals. This is the important. Then what is Google database search? It is a toolbox by Google that can search for data by name. Then UCI क्या है? It is a machine learning repository. Again, we will say UCI is a collection of databases, domain theories, and data generators in collaboration with University of Massachusetts. But these have only 5% chance of coming in your paper, so you can skip this. But if you're expecting 80 out of 80, this must be a try of you. देखो ये कुछ लिस्ट है डाटा रिसोर्सेज की। पहले आता है इंडियन गवर्नमेंट डाटा सेट। इंडियन गवर्नमेंट का भी एक डाटा सेट है जो वो ओपन करे हुए हैं और पोर्टल्स, सो दैट पीपल कैन एक्सेस दोज फ्री या ऑफ फ्री कोस्ट एंड इट्स रेडिली अवेलेबल। सो कुछ एग्जाम्पल देखो: इंडियन गवर्नमेंट डाटा सेट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डाटा सेट, EU ओपन डाटा पोर्टल, न्यूजीलैंड्स गवर्नमेंट डाटा सेट, सिंगापुर गवर्नमेंट डाटा सेट, then is Kaggle, then is govis.gov datasets, then is Google, then is UCI machine learning repository, and एक 10th भी आप लिख लो जो कि है GitHub, that is GitHub। इंडियन देखो आप बस डाटा सेट लर्न करो,
मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है और सिंगापुर का है। इंडियन डाटा, इंडियन गवर्नमेंट डाटा सेट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डाटा सेट, सिंगापुर गवर्नमेंट डाटा सेट, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट डाटा सेट। फिर आते हैं कैगल डॉट जी ओ वी एसेट्स, गूगल डाटा सेट सर्च, यूसीआई एंड गिटहब। These are some examples. Then we have is, oh, this is out of your syllabus. These have 0% chances to be covered in your examinations. Okay, हम बात कर रहे हैं अभी डाटा एक्सप्लोरेशन की. What is happening in this data exploration is that we have data exploration. The main objective of this stage is to represent data in a form that is human readable, human friendly. It is usually through graphs and charts. Main objective of this stage is to represent data in a form that is human readable and human friendly. Moving towards the next. अभी इसके कुछ बेनिफिट्स या आप ऑब्जेक्टिव्स देखिए. इट इज इजी टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. देखो, अगर आपको कोई सिंपल लिख के डिफिकल्ट जावा में, एचटीएमएल में लिख के दे दे तो आप समझ नहीं पाओगे. अगर वो ही ब्यूटीफुली ग्राफ्स के फॉर्म में, लाइन चार्ट्स के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो आप इजीली उसके ट्रेंड्स एंड गोल्स समझ सकते हो. Okay, so it is easy to take decisions based on the data that is presented in an easily readable form. डाटा बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, बार ग्राफ या पाई चार्ट की फॉर्म में. नेक्स्ट चलते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं. क्या आपको पता है बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स. एंड इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप भी. वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. Now give me a quick recap. What does data exploration means? Finding useful trends in data using charts and graphs. This is the answer. तो अगर आपको पूछे what does data exploration means, you can say finding useful trends in the data using charts and graphs. और या आप बोल सकते हैं to visualize. क्या था? हाँ, didn't remember. Okay. It is to visualize data in a form that is human readable and human friendly. Okay, moving towards next. अभी modeling क्या है? Modeling is to implement algorithms and fine tune the model which gives you the best results, or you can say to create a model. To create a model for AI which can help us to solve the identified problem. Identified problem. AI model किसके लिए चाहिए? For the functioning of AI. And AI model learns from data collected in data acquisition stage. So that's why these are interconnected and very important. बिकॉज प्रोजेक्ट साइकिल की एक मेन फीचर क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस. ओके, वी प्रोवाइड इनपुट टू एआई. इनपुट डाटा एआई मॉडल में गया एंड उसने एक आउटपुट डाटा दिया.
we have chosen. The input data is processed through the AI model, which applies to the learned patterns and algorithms to generate predictions or diseases. This output data is a direct result of how well the model was trained on the given data set. The entire process demonstrates how model transforms raw input into actionable insights or results. This is very important. देखो, we provide input to the AI. It gives an output based on the model you have chosen. The input data is processed. The input data is processed through the AI model, which applies the learned algorithms and patterns to generate predictions or decisions. This output data is a direct result. This output data is the direct result of how well the model was trained. How well the model was trained on the given data set. On the given data set. The entire process demonstrates how AI model transforms raw input into actionable insights or results. Repeat after me. We provide input to the AI model and it gives an output based on the model we have selected. The input data is processed through the AI model, which applies to the learned patterns and algorithms to generate predictions or diseases. This output data is the direct result of how well the model has been trained on the given data set. The entire process demonstrates how AI model transforms the raw input data into the actionable insights and results. Okay, this I'm telling you is very, 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 very important. ओके, अभी अगर आपसे कोई पूछे एक्सप्लेन मॉडलिंग, एक्सप्लेन मॉडलिंग तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? Modeling, in this stage, we implement algorithms and fine tune the model, which can give us the best results and can help us to and can help us here to solve the identical problem. The identified problem is called modeling. The AI model learns from the data collected in the data acquisition. Yes. So, make notes side by side. To implement algorithms and fine tune best model for best results, which can help us solve the identified problem. An AI model learns from the data collected in the data acquisition stage. Which was next? फिर आप लिखोगे we provide input to an AI model and it give us an output based on the model we have selected. The input the input the input data is processed through the AI model applied up, which applies the learned patterns and algorithms to generate predictions and decisions. This output data
This output data is a direct result of how well the model was trained on the given data set. The entire process demonstrates how AI transforms raw input into actionable insights or results. ओके अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डज मॉडलिंग हेल्प विद ऑल्सो राइट द टाइप्स ऑफ मॉडल तो आप क्या बताओगे द मॉडल्स या मॉडलिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय शोइंग हाउ थिंग्स वर्क help us understand and solve the problems by showing how does things work like with the predictions making decisions or creating designs then ये टू टाइप्स के होते हैं रूल बेस्ड एआई एंड लर्निंग बेस्ड एआई रूल बेस्ड एआई इन दिस अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है लाइक इसमें तो नहीं दिया हुआ बट let me tell you in this the machine follows the rules and instructions mentioned by the developer and performs its task accordingly in this the machine performs the task according to the rules follows in this, the machine follows the rules and instructions given by the developer and act accordingly. Again, in this, in this the machine, in this the machine, in this the machine follows the rules or instructions mentioned by the developer and and performs its task accordingly. Again, in this the machine follows the rules and instructions mentioned by the developer and perform its tasks accordingly. Again, in this in this machine follows rules or regulations mentioned by the developers and performs its tasks accordingly. अभी एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे जैसे हु स्टेक होल्डर्स व्हाट poor air quality leading to breathing issues where in urban area where traffic industries are common ये एक बेस्ड है कि आपको ऐसे ऐसे ही करना है ठीक है अभी हम अगर बात करें लर्निंग बेस्ड एआई की so in learning based AI there is no need for human being to write a set of rules or instructions for it. This type of AI learns from experience, past information, or data. In learning based AI, there is no need for human being to write a set of rules or instructions for it. In learning based AI, there is no need. In learning based AI, there is no need for human being to write a set of rules or instructions for it. This type of AI learn from past information or data, means from experience. Again, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लर्निंग बेस्ड एआई तो आप कुछ इस तरह पर इसको बोलोगे इन दिस टाइप ऑफ एआई in a learning based AI there is no need for human being to write a set of rules or instructions for it. This type of AI learns from experience, past information or data. Okay, moving towards the next. Then in stage 5 we have evaluation. Evaluation क्या होती है Evaluation to test and evaluate different models and choose the best model. Then इसमें to we test our models to check their performance and improve our models for the best performance. देखो in this we test our models for best performance
we check our model. We test our model to check their performance and improve our models for the best performance. Again, we test our models. We test our models to check their performance and improve our models for the best performance. And how is it is tested? The model is tested with collected data. The model is tested with collected data. अगर आपसे कोई पूछ ले what is evaluation, explain it. How would you explain? The main objective of this stage is to test and evaluate different models and choose the best model. We test the models to check their performance and improve the models to the for the best performance. The model is trained based on the collected data. ठीक है, दैट्स ऑल. नाउ हम आ चुके हैं एंड ऑफ दिस चैप्टर में, जो कि है डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक आवर सॉल्यूशन ready to be used. Means to deploy your solution based on the model you have selected. Repeat after me. The main objective of this stage is to make our solution ready to be used, means to deploy the solution based on the model you have selected. So, what is in this stage? In this stage, we make our solution available to users who can benefit from them. In this stage, we make our solution available to the users who can benefit from them. AI can be used on mobile apps, website apps, and many more. So, if someone asks you, what is deployment? Explain it in. So, you will explain it like this. The objective of this stage is to make our solution ready to be used, means to deploy your solution based on the model you have selected. In this stage, we make our solution available to the users which can benefit from them. AI can be used on mobile apps, website apps, etc. So guys, we have completed one chapter in just 1 hour. So, and this is our longest video on our channel. So कुछ try yourself quiz करते हैं. Does modeling means creating an AI model? Yes, of course. Yes, in modeling we select and train the appropriate AI model depending upon our problem statement. Can we use AI on mobile phones? Yes, you can use. अभी कुछ क्वेश्चंस. द एआई साइकिलिस्ट, मैंने बताया था लीडर साइकिल नहीं है, वो पहिए की तरह गोल गोल साइक्लिकल प्रोसेस है दैट गाइड्स द एआई डेवलपमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश. It is the cyclic process followed by a project. Then what is the primary goal of problem scoping in AI project cycle? It is to define the specific problem the AI will address. There is AW Canva, who, what, when, where is a helpful tool for. It is for define clear objectives. Define clear objectives in problem scoping. Then is in the context AI projects, data acquisition refers to. Data acquisition refers to the amount of data collected, the format of data, how well the data relates to the problem being solved, the source from which the data is collected. So, what's the correct answer? Tell us in the comment section. Okay, so the right answer is very easy, how well the data relates to the problem being solved. Which of the following is not a benefit of data exploration? It makes it difficult to identify. No, it makes it easier to identify. What is the main purpose of modeling stage in the AI project cycle? It is to
what it is. It is to build a computer program that can solve the identified problem. Which of the following statements about AI project cycle is false? Yes, it's organizers. No, it is not rigid, it is flexible. It is not inflexible. Next is, imagine you are building an AI system to predict flight delays. During data acquisition, what type of data would be most relevant? That would be weather forecasts for different destinations. अभी नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे because you have studied a lot till 1 hour. Okay, what is AI project cycle? AI project cycle is the cyclic process followed. Then, what are the different stages of AI project cycle? What is the importance of each stage? Okay, so there are total 6 stages that are problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, deployment. Problem scoping. Define a goal for the project, collect the data needed. Exploration 2. Visualize data in a form that is human readable and human friendly. Modeling. To implement algorithms and fine tune the best model for the best results. Evaluation. To test and evaluate the different models and choose the best model. Deployment. To deploy your solution on the based on the model you have selected. Okay, sorry. Okay, based on the model you have selected and make the solution ready to be used by others. अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एआई एथिक्स सेशन 2. Okay, let's start. देखो, what will you do in this situation? Will you serve the fallen burger or not? देखो, अगर आप ट्रे में लेके जा रहे हो कुछ, आपको सिचुएशन देते हैं. Imagine a situation where you oversee burgers at a fast food restaurant. It is a busy day with lots of orders coming in fast. While cooking, you drop a burger on dirty floor. Your boss passes by and says, "Just pick it and serve it." Will you serve the fallen burger or not? So you should not serve the fallen burger because it is unhygienic and can harm the customer's health. Why would you do that? Why it is wrong? It is wrong because it violates the food safety rules and ethical responsibility towards the customer. Repeat after me. Because it violates the food safety rules and ethical responsibility towards the customer. Because it violates the food safety rules and ethical responsibility towards the customer. What could be the result of serving the following burger? क्या रिजल्ट होगा? it could cause it could wow, what alliteration. It could cause okay, it could cause illness to customers. It could cause damage to the restaurant's reputation. It could cause lead to loss of trust. Repeat after me. It could cause illness to the customers, damage to the hotel's reputation, and lead to loss of trust. Is it okay to lie? If so, under what circumstances? Lying may sometimes be considered acceptable to prevent somebody from harm, but honesty is an important ethical value. But generally, honesty is an important ethical value. Lying may be acceptable only to prevent serious harm or somebody or protect one's safety. तो या तो किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना एक्सेप्टेबल होता है, बट फिर भी ऑनेस्टी इज एन इम्पॉर्टेंट एथिकल वैल्यू. नेक्स्ट,
If a family is hungry and has no other way to get food, is it okay to steal food from a rich store owner? Why or why not? Some may feel it justified due to survival needs, while others believe stealing is wrong regardless of the situation. This shows ये अभी क्या दिखाता है? This shows ethics can differ based on circumstances. Ethics can differ based on the circumstances. Is what most people decide always right, or can it be wrong? What most people decide can be wrong. Right or wrong does not depend on the majority opinion. Okay, अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे. एथिक्स. लेट अस ट्राई टू डिफाइन एथिक्स. एथिक्स क्या होता है? Ethics deal with the external rules of conduct of a particular group or culture of people. It is a moral compass that guides us in daily life. These are the guiding principles to decide what is good or bad, fair or unfair. These are the values that a person chooses for their life. This is the important definition. Must will be coming in your exam. Ethics deals with the external rules of conduct of particular group of culture or people. It is the moral compass that guides us in daily life. They are the guiding principles to decide what is good or bad, fair or unfair. These are the values that a person chooses for their life. अभी AI ethics क्या होता है? Ethics तो हमने पढ़ लिया, external rules of conduct. But what is AI ethics? AI ethics is a system of moral principles intended to inform the responsible development and use of AI. It acts as a guide on how your data will be collected and managed, along with the ethical issues arising out its uses. So, it is a system of moral principles. It is a system of moral principles intended to inform the responsible development and use of AI. It acts as a guide on how your data will be collected, managed, along with ethical issues arising with the out of its uses. ओके, यहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एआई के, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक डाउनसाइड रोड निकालती है रिस्क की तरफ, इक्वालिटीज़ का तरफ एंड डिविजन्स की तरफ. इसीलिए वी नीड पॉलिसीज, रेगुलेटरी frameworks to ensure ethics in AI which will benefit humanity as whole. See this question, what is AI ethics, is important for you. And then is why we need it. This is also important for your exam point of view. Then next question, how AI has impacted our daily lives. यहाँ आप ये भी कवर हो सकता है what are the benefits of lives, या इसमें ये भी कवर हो सकता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है एआई के. सो AI has made easier. AI has made our daily life easier by playing a role in areas such as voice assistants, online shopping recommendations, navigation apps, healthcare, education, and smart devices. It improves efficiency, saves times, and supports better decision making. Repeat after me. AI has made our daily life easier by helping in areas such as voice assistant, healthcare, education, smart devices, shopping recommendations, navigation apps, etc. It improves efficiency, saves time, and supports better decision making. And next question, when does AI becomes a concern? वो एक concern कब बन जाती है? AI becomes a concern when it is biased, invades privacy, misuses personal data, lacks
transparency or cause harm to individual or society. It is also a concern when decisions are made without the human oversight. Okay, repeat after me. AI becomes a concern when it is biased, invades privacy, misuses personal data, lacks transparency, or causes harm to individual or society. It is also a concern. It is also a concern when decisions are made without human oversight. Amazing. Again, AI becomes a concern when it is biased, invades privacy, misuses personal data, lacks transparency, or causes harm to individuals or society. It is also a concern when decisions are made without human oversight. How can people and organizations be accountable for building responsible AI applications? People and organization can be accountable by following ethical guidelines, ensuring fairness and transparency, protecting user data, and regularly testing AI systems for bias and complying with laws and regulations. Repeat after me. People and organizations be accountable for following ethical guidelines. First, ensuring fairness and transparency, protecting user data, and regularly checking off AI systems for bias and complying with laws and regulations. अभी हम बात करें कुछ पैरामीटर्स की. It is important to understand the ethical concerns. एथिकल कंसर्न्स कौन कौन से हैं? It brings to ensure it benefits everyone fairly. Some of the ethical concerns. Ethical concerns are AI bias, privacy issues, job replacement, job replacement, and misinformation. And misinformation. देखो bias कैसे? AI systems can sometimes treat people unequally if they are trained on biased data. This refers to AI bias. Privacy issues like AI might collect and use personal data without proper information, without proper permission, which can invade someone's privacy. Job replacement. AI can do some jobs faster than humans, which might lead to fewer job opportunities for people. Misinformation. AI can create fake news or images that look real, making it hard to know what's true or false. Importance of AI ethics. There are instances of AI technology that show racial, gender, or socio-economic bias. Being biased means to unfairly oppose or support someone or something. AI bias is when AI model gives biased results, and AI can get biased if it learns from biased data. And this is important for your exam point of view. Everyone, mark in your booklets. So, AI bias and those ethical concerns are important, and these are also important. Next, moving on towards देखिए majorly all virtual assistants have female voices. It is only now that some companies have understood that this is a bias and have started giving options for male voices such as ChatGPT. It is giving options now, but earlier it was also using only female voice. But since the virtual assistant came into practice, female voices are always preferred for them over any other voice. Can you think of some reasons for this? देखो
फर्स्टली क्या होता है, फीमेल वॉइसेस सॉफ्ट, पोलाइट एंड फ्रेंडली होती है. पीपल थिंक दैट दे आर मोर कंफर्टेबल and they are more helpful and supportive. Society likes women with service roles, and people feel more comfortable listening to them. Early assistants use female voices, so others copied it. Repeat after me. Female voices sound polite, soft, and friendly. Secondly, society likes women with service roles. Thirdly, people think they are more helpful and supportive. Fourth, user feel more comfortable listening to them. Fifth, early assistants use female voices, so others copied them. Second, we have, if you search on Google for salutes, the first few searches are mostly for female salutes. This is based on assumption that if a person is searching for a salute, is all probability it would be a female. Do you think this is a bias? If yes, there is it a negative bias or a positive one? So, yes, this is a bias. This is a negative bias because it makes assumptions about the gender and ignores the needs of males and non-female users. So that's it for our questions. So Abhi, identify various other biases are also found in various systems which are not thought up by the machine but has been transferred from the developer intentionally or unintentionally. To make AI better, we need to identify the factors responsible for it. So integrating ethical eth- ethics into AI will ensure, what will it ensure? Hum- that it will be human centric, it will be unbiased, data protective, and sustainable AI. Let's understand them in detail. Human centric क्या होता है? Integrating ethics into AI prioritizes human well-being and values. Designing systems to serve human interests and needs while enhancing user experiences and societal benefits. Then unbiased क्या होता है? Ethical AI aims to mitigate biases in algorithms and decision making processes, promoting fairness and equity by avoiding perpetuation of biases based on race, gender, or socioeconomic status. Data protective. Ethical AI prioritizes data privacy and security, ensuring responsible data collection, storage, and uses practices to avoid individual sensitive information and build trust among users. There is sustainable AI solutions. Ethical AI encourages Ethical AI encourages the development of environmentally and socially sustainable AI systems, balancing technological advancement with considerations for energy efficiency, resource consumption, and social implications. So, in conclusion, it will foster trust, fairness, and accountability while ensuring the development and deployment of AI technology that serves human interests, avoid biases, protect data, and promote sustainability. Nextly, so we are done with our chapter. It was so small, but make sure you remember it. And make sure you remember the definition of AI ethics, definition, and why we need it, and of course of the ethics की भी आपको definition learn होनी चाहिए. Okay, so moving towards the next. What does ethics primarily deals with? They are
external rules of conduct. Second, what does the ethics serve as in daily life? Moral compass. Yes, moral compass, because do you remember these were in the definition of ethics? What question does ethics address? What is wrong and right? Which what is one of the questions ethics attempt to answer regarding decision making? How decision impact others? What is the primary purpose of AI ethics? To inform responsible development and use of AI. What do we need? Why do we need policies and regulatory frameworks for ethics in AI? To ensure responsible development and use of AI. What is one of the key features of integrating AI into AI solutions? Ethics into AI solutions, sorry. To ensuring human centric AI solutions. Why is it important to integrate ethics into AI? To ensure sustainable AI solutions. Okay, reflection time. What is the significance of ethics in shaping individual conduct and moral decisions? Same, to ensure AI solutions. Why are policies needed to be? Here is the answer. Yes, to ensure responsible development and use of AI. Parameter we have already discussed. These are human-centric, unbiased, data protective, and sustainable AI solutions. And then as how does ethical AI contribute to these we have already discussed, and what is the need for creating AI solutions to make it unbiased. Okay, we are all done with this chapter. And last chapter. So for this chapter we will meet you later. No. लेटर नहीं, अभी इसको छोटा सा चैप्टर है, इसको फास्ट हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक ऑफ फ्यू सेकेंड्स. ओके, पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. वो तो सबको पता ही है. इट इज आर मेंटल एबिलिटी टू मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. Human intelligence, it is our mental ability. It is our mental ability to solve problems, make decisions, and learn new things. It is our mental ability to learn new things, make decisions, and solve problems. Done? What is AI? AI is machine's ability to make decisions, solve problems, and learn like a human. So, बस सिर्फ आपको मशीन करना है. Human intelligence is our mental ability to learn new things, to make decisions, and solve problems. AI is machine's ability to learn new things, make decisions, and solve problems like an human being. ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑटोमेशन एंड व्हाट इज एआई. ऑटोमेशन इज वे टू मेक मशीन्स वर्क ऑन देयर ओन. ऑटोमेशन क्या है? वे टू मेक मशीन्स वर्क ऑन देयर ओन, कि मशीन्स अपने आप चले, अपने आप काम करें. तो automation is a way to make machines work on their own. Automation is the way to make machines work on their own. Automation is the way to make machines work on their own. What is artificial intelligence? Artificial intelligence is a way to make machines think on their own. मतलब ऑटोमेशन में वर्क खुद करेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थिंक खुद करेंगी. And automation makes physical work easy for humans. ऑटोमेशन ह्यूमंस के लिए फिजिकल वर्क इजी करता है, वहीं एआई मेंटल वर्क इजी करता है ह्यूमंस के लिए. ऑटोमेशन मेक्स फिजिकल वर्क इजियर फॉर ह्यूमंस, एआई मेक्स मेंटल वर्क इजियर फॉर ह्यूमंस. फिजिकल वर्क कैसा? लिफ्टिंग, फोल्डिंग, मूविंग एक्सेट्रा. और एआई कैसा? मतलब
मेंटल वर्क कैसा? प्रिडिक्टिंग रेनी वेदर, सजेस्टिंग डेस्टिनेस एक्सेट्रा। देन कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। एआई कहाँ नहीं है, कहाँ है? यूट्यूब वीडियो सजेशंस, नेविगेशन मैप्स, navigation digital assistants, self-driving cars, AI fitness apps, AI in music and arts, and many more. ये क्या है? This is digital assistant, this is navigation, and this is YouTube recommendation. ओके, तो एआई के तीन डोमेन्स होते हैं। पहला क्या है? कंप्यूटर विजन, फिर है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर है स्टैटिस्टिकल डेटा। तो कंप्यूटर विजन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मशीन टू सी द वर्ल्ड। सिंपल, द एबिलिटी ऑफ मशीन टू सी द वर्ल्ड इज कंप्यूटर विजन। एबिलिटी ऑफ मशीन टू सी द वर्ल्ड। और एनएलपी, एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। स्टैटिस्टिकल डाटा, एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड नंबर्स। सिंपल। नेक्स्ट, computer vision is a domain of AI that lets machines see and understand images and videos. NLP. It enables machines to understand language, such as computers and robots use NLP to process real world language, spoken or written, and make sense of it. Statistical data helps the machines to understand large amounts of numerical data. And robots use statistical data to analyze numbers and come up with meaningful information. नेक्स्ट, हमने ये पढ़ ही लिया था सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आई है? सस्टेन वर्ड से, जिसका मतलब है टू मेंटेन, सपोर्ट, एंड्योर। एंड की आइडिया में हमने ये पढ़ लिया था, we must act responsibly so that resources on our planet can support future generations to come. And sustainability क्या होती है? Maintaining the world we live in. अभी देखो, हमें अपने रिसोर्सेज सेव क्यों करने चाहिए? क्योंकि हमारी प्यारी सी अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट लैंड, एरिया, वाटर, फूड वी हैव इज अनलिमिटेड नहीं है। यस, इट सीम टू अनलिमिटेड बट इट इज नॉट. Then, if we use all of it or pollute it, we may affect the ability of the coming generations to use it. Hence, sustainability tries to solve this problem. What does sustainability encourages? It encourages everyone around us to use resources in a responsible manner by sharing resources equally and not being wastefully. Society क्या होती है? People around us. And ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. As you know, very well know. Yeah. अभी ये एथिक्स क्या है दोबारा से? ये एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई. सो लेट्स रिफ्लेक्ट. एंड हमारी ये वीडियो का एंड आ चुका है. व्हाट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस प्राइमरी कंसर्न विद? मेंटल एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न. एआई कैसे डिफाइन करते हैं? मशीन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑटोमेशन? मेक मशीन्स वर्क ऑन देयर ओन एंड थिंक ऑन देयर ओन. एआई का काम है. पर्पस ऑफ एआई? थिंक ऑन देयर ओन, अभी बताया. विच डोमेन ऑफ एआई इज अनेबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज? जिसमें लैंग्वेज आ गया वही आ गया. व्हाट डज स्टैटिस्टिकल डाटा enable machines to understand? Numerical data. Primary purpose of computer vision: to see and understand images and videos. Sustain का meaning: to maintain, support, withstand or endure. Sustainability का aim क्या है? To solve limited resources for future generations.
What is AI project cycle? A cyclic process followed to complete an AI project. This is some dialogues and all. So we are at the end. So tata bye goodbye. We will be soon meet and अभी ये हमारी हुई सुपर मैराथन नंबर 3 or 4. Yeah. So meet you soon with data science. Tata bye bye goodbye.